आपको पहले ही जानना होगा 2019 से 1 से 2021 तक भारत के जो एक सूची मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य में नोबेल मिला था 1913 में, चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में 1968 में, मदर टेरेसा शांति में नोबेल मिला था 1979 में, भौतिक विज्ञान में चंद्रशेखर 1983 में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में मिला 1998 में, बीएस नायपाल साहित्य में 2001 में मिला, विक्टर रमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में 2009 में मिला, कैलाश सत्यार्थी शांति में 2014 में मिला, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में 2019 को मिला। तो ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ आज इस लाइव में हम दिखाएंगे द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 anaemia for the discovery for a supermassive compact object at the center of our galaxy। जन्म हुआ था 16 जून 1965। अनदर नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स एंड्रिया गेच। आगे बढ़ते हैं। डोना स्ट्रैकलैंड जो कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला 2018 में। जन्म हुआ था 27 मई 1959, गुल्फ कनाडा। एफिलिएशन एट द टाइम ऑफ अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा। प्राइज मोटिवेशन था फॉर द मेथड ऑफ जनरेटिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा शॉर्ट ऑप्टिकल फाल्सेस। काफी इंटरेस्टिंग है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2018 में फिजिक्स में। आप जानते हैं डोना स्ट्रैकलैंड। ऑल्सो अनदर नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स 1963 मारिया जीफर्ट। मारिया जीफर्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1963 जिसमें जन्म लिया था 28 जून 1906 कैटोविज जर्मनी, और उनका मृत्यु हुई है 20 फरवरी 1972 में सैन डिएगो यूएसए में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जिसमें सैन डिएगो यूएसए, मोटिवेशन देयर मेन थीम नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी एंड कंसर्न इन न्यूक्लियर सेल स्ट्रक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था 1963 में मारिया जीफर्ट मेयर। अनदर नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स 1903 मारिया क्यूरी, जो कि द रिकॉग्नाइजिंग द extraordinary service they have rendered by their joint researcher on the radiation phenomena, and Professor Henry Becquerel also, and Marie Curie, the Nobel Prize in Physics 1903, and born 7 November 1867, Russian affair, Poland also, and she died 4 July 1934. Silent friends, prize motivation is recognizing of the extraordinary service they have rendered by their joint and researchers on this radiation and phenomena discovery, that Professor Henry Becquerel, his husband. And Marie Curie is remembered for her discovery of radium, polonium, and her huge contribution to finding treatments for cancer, And Marie Curie died on 4 July 1934 in Savoy and France. And she did diet of aplastic anemia, basically a blood disease, and that often result from exposure to large amounts of radiation also.
And see, Curie was first person to win two Nobel Prize. She managed it all without a fancy lab, and उनके पास कोई अच्छा बड़ा सा लैब नहीं था. और Nobel Prize were a family affair, and their Curie was the first female professor also, and Sorbonne University. And Madame Curie is buried in the Pantheon in Paris also. And there are the her maiden name was the Maria Sklodowska, and she was also called Mania, and by her family and also their friends. And she later changed and their name to Marie when she moved to Paris. Very interesting. Must will remember there are sometimes GK and question. And also there another Nobel Prize winner in chemistry, Emmanuel Charpentier, the Nobel Prize in Chemistry 2020, as born 11 December 1968, Juvisy Paris, France. An affiliation at the time of the award, Max Planck Unit for Science of Pathogen in Berlin, Germany, and prize motivation for the development of method of genome editing also, and for the development of a method of genome editing, and the Nobel Prize in Chemistry 2020. It is very important for you. And another Nobel Prize in Chemistry 2020, Jennifer A. Doudna, for the development of a method for genome editing. Genome editing, Jennifer A. Doudna, the Nobel Prize Chemistry 2020, and also born 19 February 1964, Washington D.C., USA, an affiliation the time of award, University of California, and Berkeley, USA Prize motivation also for the development of a method for genome editing also. And another Nobel Prize winner, the Nobel Prize in Chemistry 2018, the French H. Arnold, for the directed evolution of the enzymes. French H. Arnold, the Nobel Prize in Chemistry 2018, born 25th July 1956. Pittsburgh, and USA affiliation, the name of award, California Institute of Technology, Pasadena, USA. And prize motivation basically for the directed evolution of enzyme. Very interesting, and the another prize, Nobel winner, Madam Frances Arnold. And the Nobel Prize केमिस्ट्री में अगर देखें 2009 में आदा ई वन था for study of the structure and function of the ribosome. Very interesting, Ada E1. Uh, born there 22 June 1939, जिसका जन्म हुआ, and British mandate of Palestine, and उन्होंने वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रेवर्ट इसराइल, और जिनमें उनको नोबेल मिला फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रिवोशम. वेरी इंटरेस्टिंग. आप देख रहे हैं आज इस खास मौके पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम सभी नारी शक्ति को नमन करते हैं. और आज इस बॉट में नोबेल प्राइज विनर जो हमारे विश्व में इंटरनेशनल, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मैंने सोचा कि नोबेल प्राइज विनर वुमेन्स को मैंने आज दिखा रहा हूँ हमारे लाइव में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 1964 for a determinants by the X-ray techniques of the structure of important biochemical substance. Very interesting. The Nobel Prize, another. And also Irani Juliet Curie, the Nobel Prize in Chemistry 1935, won there 12 September 1997, Paris, France. 17 March 1956. And basically the radium, Curie is also awarded 3 times the Nobel Prize. Another in the recognize of their synthesis of the new radioactive elements also. And also Curie's their Nobel Prize 7 November. Also there the Sorbonne University Paris.
And in recognize of her service to the advantage of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, also by the isolation of radium and the study of nature and components of the remarkable elements. It's very important. Also, to you, basically the Nobel Prize winner physiology and medicine to you, and he's born 30 December 1930, उन्होंने चाइना जन्म लिया। और इन्होंने बेसिकली चाइना एकेडमी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बेजिंग चाइना and prize for the discovery the connection novel therapy against the malaria basically. And also there are the very interesting चलिए another Nobel Prize winner Mabrit Muser, the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014. They are born 4 January, अभी साउंड आ रहा है ठीक है, 4 January 1963, Norway. Narayan University of Science and Technology, and prize motivation for their discovering of cell that constitute of positioning the system in the brain is very interesting. And also Elizabeth H. Blackfan, the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009. एंड उसका जन्म है 26 नवंबर मतलब 26 नवंबर 1948, हार्वर्ड टस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। And affiliation at the time of the award, University of California, San Francisco, USA, and for the discovery of how chromosomes are protected by telomers and the enzyme uh, telomers also. And also there another Francisco Very Sinuisi, the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008, born 30 July 1947, Paris. And their award regulation of retrieval infection units and virology departments instead of first year Paris, France, and prize motivation for their the discovery of human. It's very interesting. And another Linda Bivak, the Nobel Prize in Medicine 2004. And Linda even they are the 29 January 1947 he born USA, and for their discovery of odorant respiratory and the organization of the olfactory system also USA. There are the very interesting and affiliated to the time of award Fred Hutchinson Cancer Research Center. You also and also another Rita Devi Montalinseni, the Nobel Prize winner Physiology or Medicine 1986. Uh, her birth 22 April 1909, Italy, and basically his birth he died 30 December 2012, Rome, and Institute of Cell Biology of the CNR, Rome, Italy, and for their discover of growth factors. Very interesting. Uh, Another Nobel Prize winner for literature, Daniel Eversole. Daniel Eversole, their literature, he birth 22 April 1943, New York, USA, and for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal also. And another Ulaga Tokarju, the Nobel Prize in Literature 2018, and born 29 January 1962. And also the residents at the time of the award World Poland Prize motivation for the narrative imagination that encyclopedic fiction and represent the crossing of boundaries as a form of life is very interesting. And another Nobel Prize winner 2015, Siplana Alexievich, born 31st May 1948, Ukraine, and residents at the time of award
Belarus prize motivation for the polyphonic writing. Very interesting. A monuments of suffering and courage in our time. And also another Nobel Prize winner, Maria Ressa, the Nobel Prize 2021. He was 2 October 1963, born the Philippines, and prize motivation for their effort to safeguard the freedom of expression, which is a precondition for democracy and the lasting peace. Also, another Nadia Murad, the Nobel Prize Peace, Nadia, basically 2018, and born 1993, Kojo, Iraq, and for their effort, the end of the use of sexual violence as the weapon of war and around the conflicts. Very interesting. And he and another, the Mother Teresa, Peace 1979. Mother Teresa was the first Indian woman to win the Nobel Prize in 1979, and she found the missionaries of charity in 1950s. She was also awarded Raman Madagascar Peace Prize in 1962 in recognition of her work bringing help to suffering the humanity. And also आपको बता दूं कि नरो के नोबेल समिति ने मदर टेरेसा को 1979 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। जिस साल पहले मदर टेरेसा ने कोलकाता के एक रोमन कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में अपना अध्ययन पद छोड़ दिया था, और ताकि उन्होंने शहर में रहने वाले जो स्लम एरिया में मलिन बस्तियों में आ, बसने वाले गरीब लोगों के बीच काम करने का मौका मिले। तो in this eyes of the Narayan Nobel Committee and construct the effort today, the younger property and the ensure the mankind safer and better world community in which the develop should be inspired by the spirit of Mother Teresa, by respect for the oath and dignity of the individual human beings also. And also Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, the Nobel Prize Peace 2014, born 12 July 1997, Mingora, Pakistan, and United Kingdom Prize motivation for their struggle against the suppression of children and young people and for the right all children to the education. Malala Yousafzai, one of the great person, and Ellen Johnson Sirleaf, the Nobel Prize for Peace 2011, 29 October 1938, has born date, Liberia. And also a resident there at the area when the residents at this time of the award, Liberia Role, president of the Liberia Prize motivation for their the non-violent struggle for their safety of women and for women rights to full participation in peace building work. And also their Sirin Evadi, the Nobel Prize, the 2003, uh, there are the for effort for democracy and human rights, and she also focus especially on the struggle for the right of women and children. You know, the Sirini Evadi, the Nobel Prize for Peace 2003. And also Judy Williams, you know, the Nobel Prize Peace 1997 एंड 9 अक्टूबर 1950 उसके बाद डेट है, और उन्होंने टाइम ऑफ अवार्ड पोर्टनी एंड यूएसए द प्राइज मोटिवेशन बेसिकली फॉर देयर वर्क फॉर द बेनिंग एंड क्लियरिंग ऑफ द एंटी पर्सनल माइंड्स आल्सो। एंड अनदर, इसको आपको याद रखना होगा, अर्थशास्त्र में एक लिस्ट आपके सामने हमने रख रहे हैं ताकि जिन लोग यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीएससी के, तो लिस्ट को जरूर याद रखें कि 2009 में 2019 में किसको मिला भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस तरह मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स में, आपका भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में सारी लिस्ट आपके सामने है। तो ये जरूर याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। रसायन शास्त्र में मेरी क्वेरी, एरेन डेलेंस एंड डोरिथी क्रिफिट, आजाई श्वनाथ, ये सब जो नाम है आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको याद रखना है शांति विजेता की सूची, जो साहित्य में जो साल के अनुसार ईयरली मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दिया
ताकि आप इजीली याद रखेंगे। आज के इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जो मेरा लाइव था बेसिकली वुमेन नोबेल प्राइज विनर, और जिसमें ये जो लिस्ट मैंने लास्ट में आपको ये दिखाया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे ताकि इन फ्यूचर में दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड मैं ये कोशिश करूँगा कि आपने जो भी स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैंने आज ये कोशिश किया कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर कोई भी जो नारी शक्ति कोई भी किसी भी स्थिति में कम नहीं है। रिसर्च के मामले में पूरे दुनिया के सामने उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आपने देखे कि इस वीडियो में हमने इतने सारे वुमेन्स जिन्होंने नोबेल प्राइज विनर है हमारे विश्व में। और अगर हम सस्टेनेबल थिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें जो नारी जो धरती हमारे माता है और इस माता को हमको बचाना होगा और हम सब एक कदम उठाना होगा कि कैसे हम हमारे पृथ्वी को और अच्छा बेहतर करें और वुमेन एजुकेशन को और प्रमोट करें। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर जिन्होंने अपने अच्छा लैब नहीं है बट वो स्टडी निरंतर जारी रखा, कहीं ना कहीं सक्सेस उनको मिला और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। और इस तरह एक साथ होके काम करना चाहिए। और पूरी दुनिया में आज जेंडर इक्वलिटी की बात चलती है, मेल फीमेल की बात चलती है। कई जगह में फीमेल को हम आगे जाने नहीं देते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, पढ़ाई करने दूर जाने नहीं देते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग को हमको तोड़ना होगा, इस बैरियर को हमें तोड़ना होगा जिस बैरियर के कारण हम आगे जा नहीं पा रहे हैं। उम्मीद है कि आज इस ब्रॉड में ये मैसेज कि हम इस बैरियर को तोड़ना होगा, वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा एंड प्रमोट टू देयर द ऑल वुमेन्स फॉर हायर एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ही मूल मंत्र है जिससे हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड मैंने आज प्रयास किया वुमेन इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे है, आज इस नोबेल विनर जो तमाम पूरे विश्ववासी के सामने अपना रिसर्च और अपना काम करके दिखाया, उनको हमने थोड़ी सी समय में प्रस्तुत कर किया और शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। और थैंक यू टू ऑल। अच्छे रहेंगे, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।